Assalamu alaikum everyone. Welcome to the orientation session for the Teachers Summer Learning Festival. Basically, it is the continuation of all other previous teacher leadership summits and competitions that we have been having for the past 3 years now. These competitions are aimed at bringing out the best in teachers, bringing out their leadership potential, as well as showcasing their work to the public. There are many teachers who really work hard and they contribute a lot in the schools, but they are not in the limelight, or they do not come forward, or they do not have platforms to actually showcase their works. So Nurul Huda Education provides these platforms to teachers every year. And these teachers are requested to present any innovation, any new idea they have implemented, any new lesson plan, content, their own understanding or reflection of a lesson, or something that they have discovered while teaching or learning, that they come forward and share that. So the presentation time is 30 to 40 minutes during which they can present anything of their choice. It can be a lesson plan, it can be some content they have created for their lesson or subject, it can be a research they have done with colleagues, it can a classroom action research, it can be a lesson study that they have done, that they have kept on modifying the lesson. Lesson study cycles are very common in Japanese education system, whereby 4 or 5 teachers get together to improve a lesson plan of any subject. So it can be a lesson study cycle you have done and you want to present it to the rest of the teachers. It can be something that you have reflected upon, pondered, and you have come up with suggestions. For example, maybe you had a disciplinary case in the class and you introduce some interventions to help that child improve his behavior or his conduct in the classroom, and that worked, and then you shared it in your school and it was made part of the school discipline policy perhaps. Or maybe you actually introduced some new program in your school which has become a tradition now, and every year it is celebrated or a similar program is conducted. So anything which is in the domain of teaching and learning in the school, developing of a curriculum, developing of extracurricular learning activities, developing of any innovative programs. For example, maybe somebody has introduced STEM or STEAM in the school. Maybe somebody has taken students out for a field trip, which actually was beneficial for the students to learn a concept that in the classroom was not possible maybe. So all these things actually fall into this. The purpose is that any new idea, innovation, anything, because after pandemic, we have gone through a paradigm shift in education. And now it is understood that we need to make use of the students' capabilities to bring the best out in them. And then we have to make them independent learners. So in the case, if ever we are faced with any such situation where students are at home, they become independent learners. And that is, I think, the first and foremost responsibility of any teacher, that he or she actually helps students grow into independent learners, whether it is a child of a nursery class or it is a student of an intermediate or university level. We have to actually help them acquire the level that they should be at, the cognitive level, the affective domain, the psychomotor domain. जैसे कि डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं फिजिकली, कि 6 माह का बच्चा बैठना शुरू कर देता है, तो अगर वो नहीं बैठ पा रहा होता तो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं ना, डॉक्टर के पास भागते हैं. इन द सेम वे देयर आर डिफरेंट लेवल्स व्हिच द चिल्ड्रन शुड एक्वायर, जिसको हम अटेनमेंट टारगेट्स कहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, करिकुलम अटेनमेंट टारगेट्स कहते हैं. डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट उसको जो है डिफरेंट तरीके से उसको उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ होता है अपनी स्कूल पॉलिसी में. बट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक देम इंडिपेंडेंट लर्नर्स, कॉन्फिडेंट लर्नर्स, children who are able to take decisions. They become critical thinkers, because these are the 21st century skills that our children of today
need to acquire to be able to face the challenges in the future. And for that, of course, the teachers have to be innovative, the teachers have to be critical thinkers, the teachers have to be problem solvers. So this is what we are aiming to see, that what problem have you addressed in your school, in your classroom, what innovation have you implemented in your classroom, and then of course if you have done it and it went well, and even if it did not go well, then there is a learning. What we want to see is your learning as a teacher, your growth as a teacher. How well have you improved over the year, and what is the best thing that you want to present. And it can be a case study of a child कि वो बच्चा जो है क्लास में कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आपने 2-4 steps लिए जिससे वो बच्चा सही ट्रैक पे आ गया, and now he or she is achieving better or well than before. So this is an achievement, and this is what we want to see, your learning, कि आपकी उसकी understanding क्या है, कैसे उस बच्चे ने सीखा, कैसे वो improve हुआ, कौन सी intervention काम आई, कौन सी intervention से फर्क पड़ा उसे, and how can other teachers learn from your example. So basically you are presenting your own self, your own best initiative, best strategy, best content, best learning, best reflection to the rest of the teaching community. और इसीलिए इसका जो theme है वो ये है, teachers teach teachers. That is, we are teaching each other what we have learned while teaching the students. And then of course हमने इसको levels में divide किया है. We will be considering nursery onwards to KG. कुछ स्कूलों में प्ले ग्रुप KG1 KG2 होता है, तो जो भी nomenclature है, there are 3 years for the early years. जो 2.5 से 3 साल का बच्चा एडमिट होता है और फिर वो क्लास 1 में जाता है. So that is known as early years or pre-primary. And then we have class 1 and 2, वो भी mostly अब बहुत सारे स्कूलों में early years में count होता है, लेकिन हम उसको pre-primary कहेंगे. So we have first level is early years, the second is pre-primary, then we have primary from 3 to 5, then we have secondary level, और middle school 6 to 8 है, फिर secondary में उसको count करेंगे, फिर O levels और आपके matriculation के बच्चे हैं, then inter, then university level, and then teacher educators, those who are experienced enough, इतना उन्होंने experience ले लिया है कि वो teachers की training करते हैं. So they can even present anything related to teacher training. So all those who are teacher educators or they are training other teachers, वो HODs हैं, वो coordinators हैं, या वो lead teachers हैं अपने स्कूलों में, तो वो teacher training के हवाले से भी present कर सकते हैं. So these are the different categories, and for each category we will be having one person from that level and one subject specialist. So पहली दफा आपका उस level के judge के पास जाएगा, second time this will go to the subject specialist के English के जो specialist हैं वो English के सारे lessons को देखेंगे, जो उर्दू के specialist हैं वो उर्दू के सारे lessons को देखेंगे, and the third tier is the senior most judges who are either the deans or the senior people in the education fraternity, who are our gurus or who are our mentors. They are going to decide the final winners, and these winners will be from each category, and they will get a chance to present on our international conference in October, inshallah. So this is the whole plan. And then we actually gave out a form to fill, जिसमें एक छोटा सा abstract आपका मांगा था, ताकि हमें idea हो जाए कि आप क्या present करना चाह रहे हैं, और अगर उसको meet नहीं करता, तो then we can give you another chance to resend your abstract. So Falak has gone through these. Falak would like to share. Would you like to share कि आपकी क्या observations हैं, and what are the changes that you want people to make in their abstracts, and what other information do you need? So you can please now. It's over to you. Saima, I think आई थी, लेकिन she again lost connection. She has left. So जितने लोग मौजूद हैं उनकी कोई क्वेरीज हो तो वो पूछ लें उस हवाले से. फाइका भी मौजूद है हमारे साथ, फाइका हमारी PTF की मेंबर भी है, तो उनको कुछ लगता है कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकती हैं. सो आई एम हियर बेसिकली टू आंसर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि फॉर्म हमारे पास काफी सारे आ गए हैं, बट उसमें some information is missing, and then we cannot give you a date unless your form is complete and the information is correct. Okay, so over to you, Falak. Please आप पहले बता दीजिए क्या आपकी queries हैं, ये है, फिर then the participants, and then also keep on checking कि आपका YouTube पे तो कोई query नहीं आई है, then we can answer that query over there.
Okay, ma'am. Thank you. Yes, yes. And yes, I have seen a lot of everyone's abstracts, and after that, I have selected them and allotted the dates. So, Alhamdulillah, the people are in the group have a complete abstracts. They have given the right idea that what they are going to present, and their concepts are really clear about about the topic. So, बट देयर आर सर्टेन क्वेरीज जो कि मुझे आज पर्सनली मिली हैं, तो वो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी ताकि आप सबकी तरफ से कर लीजिए. अदर देन दैट, जो भी आज के यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं. जैसे सबसे पहले तो क्वेरी मेरे पास ये आ रही थी कि हम लोग अपनी वीडियोस कैसे देंगे. तो जैसे अभी तारिक साहब ने पूछा था, लेकिन वो चले गए, तो बाकी लोगों के लिए इट विल बी इजी टू गेट टू नो कि हम लोग अपनी जो वीडियोस हैं रिकॉर्ड करके कहाँ सेंड करेंगे. तो मेरा परसेप्शन ये था मैम कि हम दोनों जगह मंगवा लेते हैं, ईमेल पे भी एंड व्हाट्सएप पे भी. सो इट विल बी इजी फॉर मी एज वेल टू मेंटेन द रिकॉर्ड कि किसकी आ चुकी है, एंड देन आई हैव टू पोस्ट इट. तो सबसे पहले तो मेरे नज़र में ये इसका जवाब है कि हम आपके साथ ईमेल एड्रेस शेयर कर देंगे एंड व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देंगे, जो कि ऑलरेडी ग्रुप में मेरा तो मौजूद है with my name, so you can also share it with me. Secondly, कब शेयर करना है, तो जो भी डेट्स आप सबको अलॉट की गई हैं उससे एक एक दिन पहले तक एटलीस्ट आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस हमको शेयर कर दें, ताकि व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स जो कि आप फेस कर रहे हैं वो हम उसको अच्छे से कवर अप कर लें नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें यूट्यूब पे पोस्ट करनी होंगी वो, राइट. एक कैटेगरी वाला एक क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था, वो भी मैम ने क्लियर कर दिया कि किस तरह से अपने आप को कैटेगराइज करना है अपनी प्रेजेंटेशंस को, बिकॉज ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू बी जज्ड. एक तो ये हो गया. Other than that, I think मैम ने हर सारी चीजें, ऑल द डोमेन्स शी हैज क्लियर्ड, कि आप लोगों ने अपना प्रोफाइल्स भी प्रॉपर्ली भेज दिए हैं, जो भी आपकी पर्सनल वो है एक्सपीरियंसेस हैं. सो दैट्स गुड. अभी मैंने फॉर्म्स अपने सामने खोले हुए हैं. सो जी हाँ फलक, उस पे भी मुझे ख्याल आया कि उस पे भी मैं एक कमेंट कर दूं. Please, when you हाथ उठा रही है. I think she has when a you, question. जी, I have seen. Just wait. Let me comment on what I have to say. The picture should be professional. Please don't send us selfies. Please don't send us शादी की picture कि आप किसी function में बैठे हैं पूरे सजे धजे हुए जेवरात पहन के. तो वो जो है, it doesn't look professional, and we will not let it go on the program. So it has to be a professional pic जो आप अपनी सबमिट करते हैं अपने सीवीज पे या अपने उस पे. तो वो जो है, जो ब्लू फोटो होती है जो पासपोर्ट पे या कहीं पे भी सबमिट की जाती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, इट शुड बी एन ऑफिशियल फोटोग्राफ. इन द सेम वे द प्रोफाइल शुड बी वेरी succinct and brief, stating your qualifications, stating your total experience, and stating your expertise. यानी आपने 3 लाइन से, my name is this, I am teaching so and so at this school, and I've been a teacher for so many years, या head for so many years, and then my expertise is in mathematics teaching, or maybe teacher training, or maybe discipline policy. जो भी आपका डोमेन है, वो 3-4 अपने स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज नॉलेज वाइज एंड स्किल वाइज दोनों आप उसमें मेंशन करेंगे. सो दैट मीन्स कि टोटल 5 लाइनों की जरूरत है प्रोफाइल की. वो हमारे लिए इजियर टू रीड, इजियर टू करेक्ट. अगर कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स हो तो हमारे लिए भी मैनेज करना इजी होता है. सो लंबे लंबे चौड़े किस्से मत लिखिए. वो किस्से आपको बयान करने का मौका मिलेगा अगर आप जीतते हैं ये कंपटीशन, और जहाँ पे जो है वो आप अपना प्रेजेंट करेंगे तो आप अपना 2 से 3 मिनट ले सकते हैं अपने बारे में बताने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए. जी फाइका, अब आपका क्वेश्चन प्लीज. जी जी मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क इट कि आई वाज नॉट क्लियर अबाउट द कैटेगरीज व्हिच यू हैव जस्ट क्लियर्ड इट, कि हम अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसके लिए हम अपना टॉपिक प्रेजेंट करें. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि मैं एडिट कर सकूं अपनी चीज और दोबारा उसको रीसेंड कर सकूं फॉर माय फॉर्म, एंड कैन आई सेलेक्ट अनदर टॉपिक टू? जी, फलक ने उसका अभी एडिटिंग ओपन कर दिया है, बिकॉज हम डेट्स जब देना स्टार्ट किया तो वी रियलाइज्ड कि सम फॉर्म्स आर इनकम्प्लीट और कुछ जगह पे लोगों को समझ नहीं आई है, एंड दैट इज व्हाई दिस ओरिएंटेशन प्लान के एटलीस्ट एक वीडियो डल जाएगी सो पीपल कैन एक्चुअली गो बैक, वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड करेक्ट. और हम इसको शेयर भी कर देंगे सारे प्लेटफॉर्म्स पे ताकि सबको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए. दैट्स हाउ दे हैव टू गो अबाउट इट. सो दिस टाइम ज्यादा हमने इसको डिटेल में प्लान किया है, इसको कैटेगराइज किया है based on our experiences of the previous 3 years.
Yes. No, I just want to appreciate that initiative is excellent, which you have taken, and it's a wonderful thing. It's a very positive approach, I guess, in which we can share we can have the bundle of ideas with this from this platform, I guess. एग्जैक्टली बिकॉज And हर कोई अपना लाएगा, अपने हिसाब से लाएगा, अपने स्कूल का के अंदर से इम्प्लीमेंट करके लाएगा. तो बाकी लोगों को समटाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स इन आवर माइंड, या हमें आइडियाज आ रहे होते हैं लेकिन हम डर रहे होते हैं इम्प्लीमेंट करते हुए. लेकिन हम जब किसी और का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड देन वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट इजीली. सो दूसरा पर्पस यही है, शेयरिंग पर्पस है, और ये हमें थोड़ा सा अब प्रोफेशनल कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेटिव प्रोफेशनलिज्म की तरफ बहुत जाने की जरूरत है तमाम टीचिंग फ्रेटर्निटी को, so that we can actually improve our education system. So in the end, the benefit is to the education system, to the teachers, to each and every school who participates, to all the teachers who participate. So this is the purpose. अच्छा रमशा, आपका कोई सवाल रह गया हो तो you can unmute and ask, because फलक ने मैंने जो सवालात हमारे सामने थे उनको तो आंसर कर दिया है. अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, सॉरी, कैन आई आस्क इट वन मोर थिंग? जी मुझे ये पूछना था कि कैन वी पार्टिसिपेट इन मोर देन वन टॉपिक, लाइक एक टॉपिक कर लिया लेकिन एक और भी कर सकते हैं, या सिर्फ रेस्ट्रिक्ट होंगे एक ही टॉपिक पर? नहीं, that you have to decide, फाइका, that as a subject specialist आप आना चाहती हैं साइंसेज और बायोलॉजी या environmental साइंस पे करना चाहती हैं, या as a teacher trainer. So that you have to decide where you are the best, because we want each one to present their best practice, best moment, best lesson, best content. तो इस वजह से सबको एक ही चांस मिलेगा. जी रमशा. वेरी राइट. ओके, थैंक यू. मैम, आई पोस्टेड माय क्वेश्चन, मैंने चैट पे आपको क्वेश्चंस लिखे थे. इफ यू वांट मी टू आई कैन रिपीट इट अगेन, बट मैंने वो लिख दिए थे नहीं चैट बेटा, पे. इसलिए बोल रही हूँ कि वो चैट सबको नहीं देख पाएंगे ना, तो इफ यू रीड इट आई विल आंसर यू नाउ सो एवरीवन कैन लिसन. Sure. Okay, the first question I had was, can the presentation hover around 30 to 35 minutes, or it has to be exactly 40 minutes? No, it आपको 30 से 40 minutes दिए है. टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है. मिनिमम 30, मैक्सिमम 40 से ऊपर ना जाए, क्योंकि फिर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं. एंड देन मेबी दे हैव क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस के लिए जब आंसर करने के लिए आपको उस दिन जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन है मौजूद होना होगा ऑन आवर प्लेटफॉर्म, सो दैट इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस व्हाइल यू आर, आपका वीडियो जब चल रहा होगा तो आप उसको जवाब दे सकें. Sure. अच्छा, मैंने जब एंटर किया था, so you were answering a few queries to another participant, so I kind of missed it. But then probably what I heard was probably the decision would be a mix of the viewer choice or the jury, or it would be an entirely decision of the jury. No, it will be the decision of the jury. I said कि अगर तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी देखेगा, लेवल एक्सपर्ट भी देखेगा. फॉर एग्जांपल, अगर अर्ली इयर्स का लेसन प्लान मेरे पास आए तो आई एम नॉट एन अर्ली इयर्स एक्सपर्ट, तो आई विल नेवर जज दैट. आई वुड एक्चुअली सेंड इट टू एन अर्ली इयर्स एक्सपर्ट टू लुक एट एंड देन कमेंट. और ज़ाहिर देयर इज अ क्राइटेरिया. अब ग्रेजुअली स्लोली हम क्राइटेरिया जो है 2 तारीख तक क्राइटेरिया में डाल दूंगी, सो दैट everyone gets an idea. Basically content, style of presentation, your confidence, ये 4-5 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको देखा जाता है कि आपने क्या कंटेंट चूज किया है, क्या टॉपिक चूज किया है, how good you are at it yourself, then how confident you are presenting whatever you are presenting, and how have you actually encompassed the topic. For example, आपने noun select किया लेकिन noun को आप ये repeat करती नहीं पूरा 30 minutes noun की definition, and you did not look at the other aspects के noun कहाँ use होता है, कितने किस्म के noun होते हैं. तो ये मैं जनरल सी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रही हूँ. सो ऑफ कोर्स कि उस 30 मिनट्स को आपने कितना अच्छा यूटिलाइज किया है, हाउ वेल यू हैव यूटिलाइज दैट टाइम टू प्रेजेंट योर कंटेंट एंड टू प्रेजेंट योर आइडिया, योर इनोवेशन, योर स्ट्रेटजी, जो भी चीज आपने सेलेक्ट की है प्रेजेंट करने के लिए. एंड द टॉपिक ऑल्सो, अब आपने टॉपिक कुछ रखा, प्रेजेंट आप कुछ और कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज क्राइटेरिया. एंड देन अगर आप अर्ली ईयर्स की हैं तो अर्ली ईयर एक्सपर्ट अपना एक कमेंट करेगा. सेकंड वन इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट एक्सपर्ट. अगर आपका इंग्लिश का सब है तो इंग्लिश का जो एक्सपर्ट होगा वो देखेगा उसको उस हवाले से. एंड थर्ड वन हु विल कमेंट विल बी द सीनियर मोस्ट जजेस
जिसमें जैसे हमारे बड़े बड़े गुरुज हैं, अब्बास साहब हैं, देन डीन्स हैं डिफरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के, दे आर गोइंग टू मेक द फाइनल डिसीजन ऑफ द विनर्स लेवल वाइज. ठीक है रमशा? Sure. Thank you, miss. Thank you, miss. एनीथिंग एल्स? No, you've answered them all. थैंक यू. जमील साहब, आपका कोई Thank you. सवाल है? Jamil Saab, are you there? I think he is maybe listening. Okay, thank you, Jamil Saab. Ji Falak, anything else you want me answered or? No, ma'am. I think we have covered all the areas. जहाँ जहाँ मुझसे भी सवाल पूछे गए वो भी मैंने आपसे पूछ लिए, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके भी क्वेरीज थी वो भी मैंने वो कर दी. अभी मैंने यूट्यूब भी चेक कर लिया, सो देयर इज नो सच क्वेश्चंस. नहीं, वो अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा. अब आप ईद की छुट्टियों में जब आपके पास, जब आप फेसबुक खोलें और अपना सोशल मीडिया खोलें, तो इस लिंक को सब जगह फॉरवर्ड कर दें बैठ के, तो दैट लोग देख लें. सारे जब फुर्सत होती है तभी देखते हैं. और मैनी पीपल, आई थिंक स्कूल टीचर्स स्पेशली, बहुत सारे स्कूल्स लास्ट डे उनका 23rd को था, after the summer camps and all, so the teachers didn't even get time to actually go in a leisurely way for Eid shopping. तो आज आप सही कह रही हैं कि लगता है लोग ईद शॉपिंग पे चले गए. तो ऐसा है कि ये जो है फिर क्वेश्चन आया यूट्यूब पे, मिसबा सलीम पूछ रही हैं, so what I understand is that we need to plan a lesson or present it like a workshop. That's what she's asking. नो मिसबा, आपने देखे, हमने आपको चॉइस दिया है. इट कैन बी अ लेसन प्लान, इट कैन बी अ कंटेंट कि भाई ये कंटेंट बहुत अच्छा है, अब उसको आप डिस्कस कर. इट कैन बी अ डिस्कशन, इट कैन बी अ प्रेजेंटेशन, इट कैन बी अ रिफ्लेक्शन कि मैंने अपनी क्लास को जो है नए तरीके से ये सबक पढ़ाया और उसमें ये हुआ जिससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया. सो दिस इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लेसन प्लान. So everything will be different. हमें तो ये देखना है कि आपने क्या नया अछूता काम किया, where there was innovation, where you implemented something new, where you got a good result, and when you are saying कि बहुत अच्छा result, बच्चों को बहुत पसंद आया, क्लास में बहुत मजा आया, तो क्या मजा आया वो learning नजर आनी चाहिए आपके presentation में. So you can't just come and say कि भाई बहुत मजा आया, बहुत अच्छा हुआ, ये किया वो किया, and the learning, actual learning क्या हुई वहां पे वो नहीं पता चल रही. So main that we want to see is your learning as a teacher. आपकी क्या growth हुई है, जो भी नई चीज आपने अपनी क्लास में की है. That is what we are looking at. जी रमशा ने फिर हाथ उठाया है. जी रमशा बोले. Just the last question. Winners as per the categories or in general, मतलब fixed होंगे कि नहीं 3 winners या 5 winners या categorically है? It is going to be as per the categories. And of course there can be exceptions कि अब early years में 3 lesson इतने अच्छे कमाल के आ गए, तो there is no limit. तो हम उन तीनों को जो है वो we will appreciate or we will bring them forward. हमें तो सबसे बेस्ट उसमें से निकालना है ना. तो it can be 3, it can be 2, it can be just 1, it can be none. ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है. मुझे याद है कि एक हमने रखी थी कैटेगरी लास्ट टाइम जिसमें हमने नॉमिनेशंस सॉरी लिए थे फ्रॉम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स. तो डेडलाइन करीब आ गया, प्रिंसिपल ने किसी एक को भी नॉमिनेट नहीं किया था, तो फिर मैंने अपने सर्कल में दोबारा उसको सर्कुलेट किया और प्रिंसिपल्स को इंसिस्ट किया कि प्लीज अप्रिशिएट करें अपने टीचर्स को. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास एक भी कमाल का टीचर नहीं है जिसका आप नाम नहीं भेज रही. तो ऐसा भी होता है. So sometimes maybe in a category we may not find somebody who's good enough to be given a or should be brought forward. क्योंकि देखिए जो प्लेटफॉर्म होगा वो इंटरनेशनल होगा. And Michael Fullen, if you have studied school literature, if you have been into school improvement planning, आपने कभी किसी किस्म की research की है, तो Michael Fullen is one of the top educational leaders of the world, not just America and Canada. So he is going to be presenting on that conference. और उधर आपको मौका मिल रहा है, तो जाहिर है सब स्टैंडर्ड काम तो किसी तरह से भी नहीं आएगा उस प्लेटफॉर्म. It is supposed to be the best of the best. Ma'am, one more question from Mohammad Waqas. Can it
Can it be about any teaching pedagogies? Actually इन सबके topics मेरे सामने हैं, तो मैं बता देती हूँ कि वकास ने जो topic choose किया है, that is future proof competencies the soft skills student needs. तो अब आप इसके हिसाब से इनको जवाब दे दीजिए इस चीज का. भाई कुछ भी हो सकता है, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसको आप वैलिडेट कर सकें, उसको आप खड़े होके जो है कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकें, एंड यू आर एबल टू कन्विंस द ऑडियंस एंड द जजेस स्पेशली, and then the responsibility of spreading your lesson to everyone else is yours, क्योंकि आपको हमने एक separate event create करके दिया है participant wise. So जो थर्ड को प्रेजेंट कर रहा है उस पे 4 जुलाई का नहीं लगेगा, 4 जुलाई का 4 जुलाई वाले पर ही लगेगा जाकर. तो आप अपना वो एक तरह से आपका इवेंट पेज क्रिएट हो गया है which you have to market yourself. So let's see, get your colleagues to comment, get your friends to comment on it, so that उससे पहले भी आप क्रिटिकल फ्रेंड्स को अपना दिखा के फीडबैक ले सकते हैं, सो दैट आपका जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स फॉर दिस definitely you should have worked, you should know your curriculum, you should know your stuff, your content, you should have implemented. मतलब आप किसी को ब्लफ नहीं कर सकते कि आप आगे कहें जी मैंने यूं किया यूं किया यूं किया. तो क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम तो बैठे हुए ही होंगे, डेफिनेटली द होल टीम ऑफ नूरुल हुदा एंड द ट्रेनर्स जो मेरे सारे हैं वो सब बैठे होंगे, हम तो सवाल करेंगे. जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे, रिकॉर्डिंग आपकी चल रही होगी, तो the purpose is to ask you critical questions. So on the day of the presentation you have to be present. हमने recorded video इसलिए मांगी है कि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों को बहुत मसाइल आए थे और फिर वो फॉलो अप नहीं कर सके थे ना, रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं भेज रहे. टाइम गुजर जाता है तो शॉर्ट टाइम होता है ना, फिर जब गुजर गया तो फिर नेक्स्ट की टर्न है, फिर आपको नई डेट नहीं दी जा सकती. सो दैट इज द रीजन दिस टाइम वी हैव आस्क्ड फॉर अ रिकॉर्डेड, ताकि आप ये भी ना कहें कि जी मेरा माइक नहीं चल रहा था, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया इसलिए अच्छा नहीं हुआ, कैन आई सेंड इट अगेन, because you will be recording it from the comfort of your home, from the comfort of your room. अपनी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आप कर रहे होंगे सुकून से बैठ के, तो इसलिए आपको कोई मसला नहीं आएगा. और हमारा काम होगा कि हम आपको हर जगह जो है सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर दें. ओके मैम, मिसबा सलीम ने दोबारा से कमेंट किया है, आई एम गोइंग टू शेयर माय राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, एक्चुअली हाउ टू स्पार्क राइटिंग, द वेरियस वेज आई मेक देम राइट. और इनका टॉपिक जो उन्होंने चूज किया दैट इज बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग. वेरी गुड, अच्छी बात है. This is one of my favorite topics also. So you can actually take help from वो मेरे जो है स्लाइड शेयर पे मौजूद है क्रिएटिव राइटिंग का पूरा वर्कशॉप मटेरियल. So see if you are doing something different from that. If anyone wants to ask questions, so they can also ask on the YouTube and in Zoom meeting as well, क्योंकि हम दोनों जगह से cater कर रहे हैं इसको. हाँ, उसके अलावा मैंने ये लिंक शेयर फेसबुक के ग्रुप में भी कर दिया है. प्लीज ज्वाइन आवर टीचर्स कम्युनिटी. फलक आप जो है ना यूट्यूब के नीचे भी हमारी जो टीचर्स कम्युनिटी का फेसबुक ग्रुप है उसको भी शेयर कर दें, और आप इसका लिंक भी शेयर कर दें दोबारा से यूट्यूब का भी इन द ग्रुप्स, सो दैट पीपल कैन वॉच, कमेंट एंड आस्क. और मुझे जहाँ जहाँ फुर्सत मिलेगी ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज ऑल्सो I will reply to your comments, and same Falak will do. Falak को भी पूरा answer समझ आ गई सारी चीजें, so she is going to be replying to you. Mostly वही आपसे communication में होंगी, giving you dates, telling you when your presentation is. So she is going to be assisting me in communicating with you all. और जहाँ किसी को जो है special assistance की जरूरत हो तो you can always write to me. My email address is given on the platforms, all platforms, and official WhatsApp number भी सब जगह दिया गया है. So with this we end this orientation session, and thank you for those who joined personally. तारिक साहब चले गए हैं, सामा आई थी थोड़ी देर को, वो भी चली गई हैं. So I thank everyone who is present here personally to listen to us, and those who will be listening to us later. I would just reiterate that you can put your questions in the comments in our group. You can even send questions on the event page, and we will be catering to your queries. And second तक तो हमने डेट एक्सटेंड कर ही दी है, लेकिन यह है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि भेज दें, क्योंकि सारे फिर ईद में मसरूफियत होती है तो फिर रह जाता है.
So we hope to receive all nominations by 2nd. Already the date has been extended. And we begin the first presentation on 3rd of July. Tariq साहब और फाइका 4th को present कर रही हैं, और accordingly बाकी लोगों को जिन जिन के abstracts बिल्कुल सही थे उनको dates दी जा चुकी हैं और वो भी share कर लिया गया है in the group. जिन जिन लोगों के approve हो गए हैं abstracts या complete हैं और या जिन्होंने registration form fill कर दिया गया है उन्हें WhatsApp group पे भी add कर लिया गया है, और सारी मजीद information, deadlines and all other instructions are going to be given in the WhatsApp group. So thank you so very much everyone, and have a very happy Eid and enjoy yourself with families, as well as start preparing for your presentations and join this event, because it is going to be a mega event this time. Thank you so very much. Thank you so very much, and those please remember everyone in duas, especially for tomorrow. और जो लोग रोजा रखेंगे, मैं भी कल इंशाल्लाह रखूंगी, तो जरूर दुआ में सबको याद रखिएगा. And advance Eid Mubarak to all. Thank you. Eid Mubarak, Eid Mubarak.